सेक्स सुक्स की बातें। How important is foreplay? 4 मतलब पहले, play मतलब play. 65% women have an orgasm in a heterosexual relationship versus more than 84% men have an orgasm. Because सिखाया नहीं जाता है. Versus when you compare that with a homosexual relationship, where you compare that with lesbians, women have a higher likelihood of getting an orgasm because सबको पता है actually करना क्या है. Yeah. And it's not a man problem, Yeah. it's an education problem. किसी को नहीं सिखाया जाता है, लड़कियों को भी नहीं पता होता है most cases. Getting your sex ed from porn is like getting your physics lesson from a Rohit Shetty film. Lifestyle, entertainment, and everything in between. This is the Pinkvilla Podcast. Hi everyone, this is Avinash Lohana, and I want to start this interview by saying sex. Few moments later. 2 hours later. Okay, so now since we have your attention, let's talk more about this, but in a more healthier, nicer way. And who better to discuss this than Dr Tanaya herself? Hey! Hello, how are you? Very well, how are you? Very good. You know, my first email to you for doing this was in May. It took me 6 months to get you here. Thank you. I'm so sorry. My book came out early last year, which meant that my whole calendar went out of the window because I had no idea that a book tour is that intense. Yeah, I was crazy. like, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी. And when it actually came on to me, then managing hospital and the book tour and other work commitments, I realized that life is very difficult. Yeah. And it's apparently bestseller, so congratulations for that. Thank you. It was very exciting. We sold 10,000 copies in 35 days. How amazing. It was insane. Very exciting because it's my first book as well. Yeah. And you know, you're a sexual health educator, Tanaya. So, you know, my first question to you is actually very, very simple. That when people come to you to discuss their sexual problems, are people still shy or they are okay to say penis and vagina in a easy way? तो दोनों तरह के रिस्पॉन्स आते हैं. कभी कभी लोग बोलते हैं प्राइवेट पार्ट्स में इशू है. कभी कभी लोग बोलते हैं कि यू नो आई हैव दिस इन माई एस क्रैक. सो मतलब बहुत ही एक्सप्लिसिट हो जाएंगे. बट आई थिंक दैट्स गुड कि मतलब the more comfortable we are with saying naming body parts. कभी नाक बोलने में कोई नहीं शर्माता है कि मेरे नाक के राइट साइड में प्रॉब्लम हो रहा है. बट when you have to say the same thing about like quote unquote private parts, तब बड़ा intense हो जाता है, टेंशन हो जाती है. So it's changing, especially with my Instagram and my YouTube presence. लोगों को पता है कि इसके सामने बोला जा सकता है. But it's still quite. I think it's also because where I live in Allahabad, Uttar Pradesh. तो थोड़ा जनता अलग है वहाँ पे compared to over here. So it's a mix, I think. Sure. You mentioned pleasure, but apparently I've read somewhere that 10 to 15% women have never ever orgasmed in their life. They don't know what orgasm is. A lot of women partners do not orgasm, which is, if a man can orgasm, in fact women have a superpower, and again correct me if I'm wrong, they can have multiple orgasms as well. But not many men think about it. Okay, have you orgasmed also in this entire process? Penetration is not the only way to help a woman orgasm. How important is foreplay? Absolutely. Let's talk about the word foreplay actually. For मतलब पहले, play मतलब play. So it seems like obviously it has been, you know, the sentiment behind the word has not been negative. But अभी मैं कभी इस बारे में सोचती हूँ और बहुत सारे सेक्शुअल हेल्थ रिसर्चर्स भी यही बात करते हैं कि when you call it foreplay ना लगता है ये appetizer है, ये मेन कोर्स नहीं है. मेन कोर्स penetration है. There's like a lot of importance given to penetration. And then dessert orgasm है कि तो पहुँचना ही पहुँचना है यहाँ तक. And I think what we kind of lose in that process is that sex in itself, not sex, intimacy in itself is such an important thing you build with your partner. तो अगर हम उसको stages में ना सोचें तो it's just healthier for us. It is a little bit of a change in approach as we've had it so far, but कर सकते हैं, I'm sure change. Now coming to the second point, why I have this thought is because ये फिर उतना importance नहीं देता है to women's pleasure. Because like you mentioned, most women do not have an orgasm from penetration alone. Yeah. So penis का जो जुड़वा भाई जुड़वा बहन whatever at the very embryo level, अगर जिस टिश्यू से क्लिटरिस बनता है उसी टिश्यू से पीनस बनता है. अगर सही हार्मोन्स दिए जाएं तो वही क्लिटरिस पीनस बन जाएगा. अगर वो हार्मोन्स ना दिए जाएं then it will stay a clitoris. So हमें क्लिटरिस के स्टिम्युलेशन पे बहुत फोकस करना है. एंड
that is the way most people have an orgasm. It's kind of like if you're having an itch over here and you keep scratching over here, तो खुजली नहीं खत्म होने वाली है. And that's what we've done so far with women's sexuality, कि we're just like penetration without realizing that actually it's the clitoris that needs the focus. Heterosexual relationships में, I think I don't quote me on this, I'm definitely wrong on the number, but I think it's 65% women have an orgasm in a heterosexual relationship versus more than 84% men have an orgasm, because सिखाया नहीं जाता है. Versus when you compare that with a homosexual relationship, where you compare that with lesbians, women have a higher likelihood of getting an orgasm because सबको पता है actually करना क्या है. Yeah. And it's not a man problem, it's an education problem. किसी को नहीं सिखाया जाता है, लड़कियों को भी नहीं पता होता है most cases में. एक term है G-spot, कि if you hit the G-spot, the girl is happy. Now, this is, I think, a very slang language, because I saw your podcast with Raj and you said G-spot करके कुछ नहीं होता है. Please explain me this in more detail. क्या है ये? मतलब what is the way to make a woman feel pleasure? First answer, the way to make a woman feel pleasure is to talk to her and find out what she likes and find out what works for her, because not everybody has the same template. Yeah. Secondly, by and large, टेम्पलेट सेम होता है. और वो जो सेम टेम्पलेट होता है वो होता है if you focus on the clitoris, चाहे वो फिंगर्स से हो, चाहे वो टंग से हो, चाहे वो टॉयज से हो, whatever works. सबको अलग अलग स्टिमुलेशन पसंद है. कुछ लोगों को डायरेक्ट क्लिटरिस पे डायरेक्ट स्टिमुलेशन नहीं पसंद है, कुछ लोगों को इनडायरेक्ट पसंद है. सो आई थिंक कॉन्वर्सेशंस आर इम्पॉर्टेंट दैट वे. एंड देन थर्डली, Cosmopolitan magazine came out with like an apology कुछ साल पहले. They were like, we are so sorry, we've been telling you to look for the G-spot for so long, and now all the research says there's no such thing like a G-spot. Do I have some props? So if we take this bottle and we think कि vagina ये है, vagina is a tube at the end of the day. Yeah. When we think of the clitoris, हमें clitoris बस इतना सा दिखता है vagina के opening के थोड़ा ऊपर. What we don't know is कि clitoris बस इतना बड़ा सा नहीं होता है. It's about the size of your palm. Oh. And it's a bigger body. और उसमें ऐसे 4 पैर होते हैं. 2 पैर होते हैं, वो वजाइना के ऊपर ऐसे बैठे होते हैं. तो जब हम जी स्पॉट का डिस्क्रिप्शन सुनते हैं ना, दे ऑलवेज से इट्स बिटवीन 11 o'clock and 1 o'clock ऑन द टॉप वॉल ऑफ द वजाइना. तो वेयर इज द कैमरा दैट वे. 11 o'clock और 1 o'clock ऐसे आया, तो इस पार्ट में दे से दिस इज द जी स्पॉट. इफ यू थिंक अबाउट इट, अगर ये क्लिटरिस है तो व्हाट आर यू डूइंग? यू स्टिमुलेटिंग द क्लिटरिस ओनली ना. इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ द क्लिटरिस होता है. इसको हम अब बोलते हैं जी जोन, बिकॉज वी हैव नाउ अंडरस्टूड कि ये क्लिटरिस और वजाइना और यूरिथ्रा का एक कॉम्प्लेक्स होता है. इसको हम वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्लिटरो यूरिथ्रो वजाइनल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. इसको CUV कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं फॉर शॉर्ट. एंड लेट्स मेक इट इवन ईजियर, लेट्स जस्ट कॉल इट द जी जोन. सो दिस इज द जोन वेयर ऑल 3 टिश्यूज इंटरैक्ट, एंड क्लिटरिस के इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन से यू कैन गेट प्लेजर, but the likelihood of orgasming from that is low. But once again, orgasm is not the dessert in the conversation, it's just a part of the journey. Yeah. So if it's something that works, it works. If it doesn't work, कोई बात नहीं, कुछ नया सीख लेंगे. जी. And everything boils down to education, right? कि some people might also see this podcast and say, oh, why they are discussing sex? There are other bigger problems in life. Sex सुख की बातें. हाँ, ये बहुत comments आएगा, I'm pretty sure. But I think the reason we need to know about sex and sex education is also because it leads to multiple traumas. It leads to other diseases also. Let's talk more about that. Sexually transmitted diseases are a very common thing in India, and I think abroad also. One of the reasons is we are not very sure of exactly how to use precautions. एक हमको पता है कि कॉन्डम हो गया, कि कॉन्डम यूज़ करो तो there are less chances of any kind of diseases being contracted apparently. The other thing is contraceptive pills. But I have a problem with this. Do you think contraceptive pills also have a harmful effect on a woman's body? Does it have side effects? Okay, so there's multiple layers to this question. The first thing is why this conversation is important. So मैंने अपना मास्टर्स किया है क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी में, which basically means कि जिन लोगों को people who are struggling to have a baby, तो वो they go for procedures like IVF and IUI. Yeah. तो मैंने ये सीखा है कि ये procedures कैसे करते हैं, patient handling क्या करनी है, procedure क्या करनी है. What I learned over there was, and I was studying at Oxford, so it was a very
मल्टी डिसिप्लिनरी टाइप ऑफ सिचुएशन, हर डिपार्टमेंट से हमें आके कोई पढ़ाता था कि इस तरह से ये चीज़, मतलब हाउ इंटेंस स्पोर्ट्स कैन अफेक्ट योर फर्टिलिटी एंड स्टफ लाइक दैट. तो हमें स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी से भी आके कोई पढ़ाता था, कहीं हर जगह से पढ़ाता था. एंड व्हाट आई लर्नड वाज दैट अगर हम बेटर फर्टिलिटी एजुकेशन करें और बेटर सेक्स एजुकेशन करें, तो जो इतनी इनफर्टिलिटी के इश्यूज हो रहे हैं लोगों को, या दे स्ट्रगलिंग विद कंसीविंग, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जी. एंड अ लॉट ऑफ इट रेस्ट ऑन द फैक्ट कि जितने मोस्ट STIs में सिम्टम्स नहीं आते हैं. सो STI वुड बी अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, और अक्सर कोई सिम्टम नहीं होता है, स्पेशली फॉर मैन. Women still get symptoms faster, men don't as much, which means that a lot of us are walking around carrying STIs, हमें पता ही नहीं है जी. और जब उसके कॉम्प्लिकेशन सेट इन होते हैं ना, तब दिमाग जलता है कि भाई ये क्या हुआ, ये पहले क्यों नहीं पता था. सो इफ वी कैन प्रिवेंट कि वो कॉम्प्लिकेशन वाली स्टेज तक पहुंचे ही ना, देन वी कैन मेक एवरीबडी हेल्थियर एंड हैप्पियर. एंड दैट्स काइंड ऑफ हाउ आई गॉट इनटू ऑल ऑफ दिस. आई वाज लाइक थोड़ा बैक रोड लेके पहले काम शुरू करना पड़ेगा एज अपोज टू स्टार्टिंग एट दिस पॉइंट. Now coming to STI prevention, which is what we are actually before that, symptoms क्या है STI का? When you said बहुत सारे अलग-अलग में दिखते हैं, तो क्या दिखते हैं? So lots of different things. If you having any unusual discharge, so first thing vaginal discharge completely normal होता है, सबको होता है. But अगर उसमें कुछ unusual symptoms आ रहे हैं, what is important to understand is कि आपका normal क्या है. जैसे अगर बहुत ज़ोर से घर में छौंक लग रहा हो, तो नाक से पानी आने लगता है. इट्स द सेम थिंग, बट इफ दैट नाक से इट्स नॉर्मल पानी, दैट पानी आना. बट अगर ये पानी का कलर चेंज हो गया, सो द सेम थिंग, इफ योर डिस्चार्ज लुक्स डिफरेंट, यू अंडरस्टैंड योर नॉर्मल. इफ इट लुक्स डिफरेंट, इफ इट स्मेल्स डिफरेंट देन व्हाट इट यूजुअली डज, इफ इट कम्स विद एनी अदर सिम्टम्स, जैसे इचिंग हो गई, बर्निंग हो गई, कलर चेंज हो गया सडनली वल्वा का और पीनस का, इन्फ्लेमेशन टाइप का दिख रहा है, पेन हो रहा है. सो दीज आर थिंग्स टू वॉच आउट फॉर. एनी इश्यूज विद पीइंग, अगर पी करते टाइम जलन हो रही है, विच इज़ वेरी कॉमन, UTI लोग समझते हैं, बट ऑफ्टन टाइम्स इट कैन ऑल्सो बी अ साइन ऑफ एन STI. एनी पेन विद pooping, any pain with sex, these are things that we need to watch out for. Same for men? Same for men. And any unusual eruption, basically जो आपका नॉर्मल है ना, उससे अलग कुछ दिख रहा है कि ब्लिस्टर्स हो गए, अलग से कोई लीजन टाइप का दिख रहा है. सो इफ इट लुक्स, जैसे हम रोज़ अपनी शक्ल शीशे में देखते हैं, नया पिंपल आता है तो हमें पता रहता है कि पिंपल आया है, तो अपना नॉर्मल हम समझते हैं, नॉर्मल से डिविएट होता है तो हमें पता रहता है. द सेम थिंग वी हैव टू डू फॉर आवर सेक्सुअल हेल्थ ऑल्सो. सो इफ यू आर फाइंडिंग दैट समथिंग इज डिफरेंट, गो टू अ डॉक्टर. बट मोर देन 50% ऑफ द टाइम देयर आर नो सिम्टम्स. दैट्स वाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि हम प्रिवेंशन पे और टाइमली इंटरवेंशन पे फोकस करें. अब टाइमली इंटरवेंशन क्या हुआ? Every time you have a new sexual partner, and that does not mean penetrative sex, any kind of new exploration, you should always get an STI test done. Basic कुछ टेस्ट रन करेंगे, ब्लड टेस्ट होएगा, शायद वेजाइनल या पीनस से सिक्रीशंस का स्वॉब लेके they will do a basic test to see if you're okay. Now STIs are supremely common. जैसे खांसी जुकाम सबको होता है, वैसे STIs भी बहुत कॉमनली होती हैं. अच्छा, बहुत कॉमन होती हैं. With people being unaware of it. Yes. Scary. And that's why पहली चीज़ हमें इसमें शर्म नहीं रखनी है कि खांसी जुकाम होता है तो हम किसी को शेम नहीं करते हैं, हो उसका कैरेक्टर खराब है इसलिए उसको जुकाम हो गया है. बट द सेम थिंग हैपन्स विद STIs कि उसका कैरेक्टर खराब है इसलिए हुआ होगा. सो इट्स नॉट दैट आपके एक सेक्सुअल पार्टनर से आपको STI नहीं होगा. एक पार्टनर से भी हो सकता है, 50 पार्टनर से भी हो सकता है, 50 पार्टनर से नहीं भी हो सकता है. दैट्स वाई always do an STI screen every time you have a new partner. हम लोग जनरली if you don't have a steady partner, हम लोग recommend करते हैं साल में एक बार तो करा लेना चाहिए जी. इसके बाद always use condoms. Condoms are the only contraceptive in the whole world that can prevent a sexually transmitted infections. That can prevent a sexually transmitted infection. So basically ना जो fluid होता है जेनिटल एरिया से, जो भी फ्लूइड निकल रहा है, दैट इज़ यूजुअली वन ऑफ द वेज यू कैन ट्रांसमिट STIs. वन ऑफ द वेज, नॉट द ओनली वन. तो अगर हम उसमें बैरियर लगा दें तो वो फ्लूइड से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होगा एंड द लाइकलीहुड ऑफ गेटिंग दैट इन्फेक्शन इज लोअर. यू मीन सीमेन एंड वजाइनल फ्लूइड? वन ऑफ द थिंग्स, बट टच से भी हो सकता है. ओके. सो सेक्शुअल कॉन्टैक्ट जिसे हम बोलते हैं,
इसका मतलब ये नहीं है दैट इफ यू नो यू सिटिंग लाइक दिस एंड आई टच यू लाइक दैट आपको STI हो जाएगा, बट सेक्सुअल टच या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है. नाउ द ऑब्वियस क्वेश्चन दैट कम्स टू माइंड इज कि आई एम नॉट हैविंग एनी पेनिट्रेटिव सेक्स, आई कैन गेट अवे विदाउट कॉन्डम्स, कोई दिक्कत नहीं है. बट दैट्स नॉट द केस. ओरल सेक्स के टाइम भी हमें कॉन्डम्स यूज़ करने चाहिए. वेरी फेमसली माइकल डगलस हैज सेड कि उनको अनप्रोटेक्टेड ओरल सेक्स से थ्रोट कैंसर हुआ था. अभी हाल में न्यूज़ में भी काफ़ी आ रहा था दैट देयर इज अ थ्रोट कैंसर एपिडेमिक इन द UK बिकॉज ऑफ अनप्रोटेक्टेड ओरल सेक्स. नाउ ऑन अ penis you can put on a condom, but what about if you're having oral sex with a woman? तो वाल्वा पे क्या करना है? You can take the same condom. Let's use this glass. Yeah, it's kind of the shape of a condom. if you chop off the top part, तो जो cap होता है condom का, so now it will become a tube. Yeah. And then you cut it from one side. So it will open up and it will become a square piece. Correct. So you can use this. It's called a dental dam, actually the actual thing you can find. But एक dental dam मैंने 100 रुपये का बिकते हुए देखा है, तो मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में कोई खरीदने वाला है. तो हम अपनी dental dam घर पे बना सकते हैं for any kind of oral sex. Anal sex के टाइम भी condoms यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. Anal sex has the highest risk of transmitting HIV if you've had it unprotected. So condoms मतलब एक जो हर डॉक्टर बोलता है ना कि एक बिना बुद्धि लगा एक वन थिंग टू बेटर योर हेल्थ, सुट्टा छोड़ दो, एक्सरसाइज कर लो, कॉन्डम लगा लो और डेंटल डैम लगा लो. Now with that out of the way, on a woman, or if some people also have oral anal sex, इसको analingus बोलते हैं. If somebody is doing that, then they have to be extra careful of making sure that they're using a dental dam in that case. इसको rimming बोलते हैं commonly. So the third thing is contraceptive pills. अब जब हम लोग contraceptive pills की बात करते हैं तो हम अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं कि हम emergency contraception की बात कर रहे हैं, जिसको ब्रांड नेम्स में हम iPill या unwanted 72 नाम से हम जनरली मार्केट में देखते हैं, जिसको टीवी पे 72 घंटों के अंदर वो वाला, दैट इज़ टू बी यूज्ड इन एन इमरजेंसी सिचुएशन. उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इमीडिएट टाइम पे, ब्रेस्ट टेंडरनेस, वॉमिटिंग, पीरियड डिले हो जाना, पीरियड अर्ली आ जाना. लॉन्ग टर्म में देर आर नो, इट्स नॉट गोइंग टू हार्म योर फर्टिलिटी इन द लॉन्ग रन, बट वो इतना हैवी डोज ऑफ हॉर्मोन्स होता है ना कि एक गोली चला के जिसको हम काम कर सकते हैं उसमें हम न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देते हैं. Essentially that's what's happening. But of course, you know, sometimes things don't work out the way we want to, तो emergency contraception का खूब यूज़ है. I'm absolutely not against it. I'm just against using that as a regular contraceptive. अब contraceptive methods हज़ारों होते हैं, हज़ारों तो नहीं, वैसे बहुत सारे होते हैं. But you can have pills, you can have patches, you can have injectable devices, you can have things that are put inside the uterus, you can have permanent contraception, बहुत कुछ होता है. But one of the best inventions of mankind, in my opinion, is definitely the oral contraceptive pill. Contraceptive pill का पर्पस ये होता है कि जो हमारी बॉडी से हर महीने एग रिलीज होता है वो उसको रोक देता है. सो हर महीने हमारी बॉडी में हार्मोन्स का ऐसे ऐसे साइकिल चलता है, ये उस साइकिल को ऐसे ऐसे चलने की जगह ऐसे चलने देता है. सो यू स्टिल हैव हार्मोन्स, बट वो जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसको ये स्टेबलाइज कर देता है. What that means is that काफ़ी लोगों को जिनको बहुत भयंकर PMS होता है, PMDD होता है, पीरियड पेन होता है, फ्लक्चुएशन से एक्ने होता है, हेयर लॉस होता है, PCOS में प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सबको हम हार्मोनल इरेगुलरिटी को हम स्टेबलाइज कर सकते हैं. जैसे अगर किसी को आयरन डेफिशिएंसी है तो हम उनको बाहर से आयरन चढ़ा सकते हैं, आयरन की गोली दे सकते हैं. इट्स द सेम थिंग, यू आर जस्ट फिक्सिंग द इरेगुलरिटी. विद दैट सेड, it has also a lot of non-contraceptive benefits, like I said, PCOS में, acne में, hair loss में, जिन लोगों को बहुत excessive period pain होता है, endometriosis, adenomyosis, ऐसी medical conditions में, इन सब में ये help कर सकता है. Plus it also has a contraceptive effect. Unfortunately, इनका PR कैंपेन अच्छे से हैंडल नहीं हुआ है और इनकी मार्केटिंग बहुत ख़राब हो गई है for a bunch of reasons. जब 70s में when the pill was being tested, it was tested without consent.
सो US डॉक्टर्स ने पोर्टोरिकन औरतों पे, सो लॉट ऑफ रेसिज्म ओवर देयर, बहुत हैवी डोजेस में उनके कंसेंट के बिना उन पे टेस्ट कर दिया, तो इनका PR कैंपेन का स्टार्ट ही डिजास्टर से हुआ। फिर प्लस जब पहले की जो दवाइयाँ होती थी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उनमें बहुत हैवी डोज ऑफ हार्मोन्स आता था जी। अब हम बहुत हल्की डोजेस पे देते हैं, तो उसकी वजह से पहले के जो जनरेशन का थॉट है ना कि हमें बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वेट गेन होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अभी भी हम समझते हैं कि अभी भी होगा। दैट्स नॉट टू से कि अगर किसी को कोई इश्यूज आ रहे हैं तो वो मेकिंग इट अप, होते हैं, हर किसी को, हर इंसान को अलग अलग तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बट लार्जली बाय एंड लार्ज द पिल इज़ वेरी वंडरफुल, वेरी सेफ फॉर पीपल। थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, सबको होते हैं, मुझे भी होते हैं, बट जबकि मैं इतनी बड़ी, मतलब मैं तो झंडा लेके घूमती हूँ हर जगह कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का, बट इवन देन we just have to think of it as some kind of a medication management. हाइपरटेंशन के लिए हम हाइपरटेंशन की दवा खाते हैं, उसके भी अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। सो इट्स जस्ट द अमाउंट ऑफ बेनिफिट यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस वर्सेस द अमाउंट ऑफ साइड इफेक्ट्स, थोड़ा ट्रेड ऑफ इज मोर ऑन द बेनिफिट साइड। विद ऑल ऑफ दैट सेड, बहुत तरह की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, अगर किसी को सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, जो कि होते हैं, भरपूर लोगों को होते हैं, देन दे कैन स्पीक टू अ डॉक्टर एंड ट्राई अ डिफरेंट काइंड। जिस तरह से एंटीबायोटिक्स के इतने सारे टाइप्स होते हैं, वैसे ही पिल्स के भी उतने ही सारे टाइप्स होते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं, अलग अलग डोजेज होते हैं। सो यू कैन ऑलवेज स्पीक टू योर डॉक्टर इफ इट्स नॉट वर्किंग वेल फॉर यू। या गोइंग बैक टू द एजुकेशन क्वेश्चन, इंडिया में हम सबको सेक्स एजुकेशन दिया है पॉर्न इंडस्ट्री ने, अनफॉर्चुनेटली। मुझे याद है जब हमारे स्कूल में सेक्स एजुकेशन का क्लास था, मैं बॉय स्कूल में था, तो आधा टाइम तो सब हंसते ही थे, किसी ने कुछ नहीं सुना है मेरे हिसाब से उस टाइम पे। इट्स और आई हैव हर्ड इवन इन कोएड स्कूल्स लड़कियों को अलग बिठाते हैं, लड़कों को अलग बिठाते हैं, और उसके बाद एक एजुकेशन दिया जाता है। इज वॉट एवर वी सी इन पॉर्न अनहेल्दी? So there's something on the internet is called the Rule 34, which is basically आप दुनिया में जो चीज़ सोचे ना उसका पॉर्न बन जाएगा। आप इस बोर्ड का भी कोई पॉर्न बना सकता है। somebody will have sexual desire or maybe fabricate a sexual desire towards this board. So ऐसे तो बहुत वास्ट समुंदर है कि क्या क्या हम देख सकते हैं, बट लार्जली जो मेन स्ट्रीम पॉर्न होता है उसमें हम बहुत ही बकवास चीज़ें सीखते हैं। फर्स्टली कि यू नो women are always primed and ready. Now if we think of जैसे penis में externally erection होता है, वैसे vagina में internally एक erection ही हम समझ सकते हैं उसे, कि vagina expand करता है कि वहाँ penis के लिए space बन जाए, arousal होता है। इसमें थोड़ा समय लगता है। Not just vagina penis के लिए जगह बनाता है, but lubrication भी create करता है। जैसे अगर चूड़ी टाइट है और हम ज़बरदस्ती पहन रहे हैं तो दर्द होता है, वही अगर इफ यू पुट ऑन सम साबुन एंड यू पुट ऑन दैट चूड़ी तो वो आराम से चढ़ जाती है, बिकॉज लुब्रिकेशन आ जाता है। द सेम वे वी कैन प्रिवेंट पेन विद सेक्स, अगर हम थोड़ा समय दें। इसको प्री हीटिंग द ओवन कहते हैं बेसिकली। जस्ट गिव इट सम टाइम, इट विल क्रिएट दैट स्पेस, इट विल क्रिएट दैट लुब्रिकेशन। पॉर्न में तो नहीं दिखाते हैं, पॉर्न में तो दिखाते हैं नॉक नॉक हेलो लेट्स। एक तो पहली चीज़, the way women's sexuality is represented is wrong. Secondly, बहुत violent porn होता है. Most even mainstream, regular mainstream porn is quite violent and quite derogatory towards women. Yeah. जिस male gaze से वो बनता है, तो उसके sociological implications की मैं बात नहीं करने वाली हूँ. That's not my area of expertise. But I will definitely say कि health reasons जो हम चीज़ें देखते हैं, अगर इतना violent sex होए तो it can hurt both partners. It can hurt the penis, it can hurt the vagina. There's no bone inside the penis, but बहुत intense और violent sex से penis fracture हो सकता है, and it's a medical emergency. तुरंत सर्जरी करानी होती है. So intensity aside, लोगों के दिमाग में बहुत गलत आइडियाज आते हैं about sex. They think that, particularly for men, size insecurity बहुत create हो जाती है, because you know, in pornography you don't see anybody with like an average size penis. You see 8 inches. अब सबको लगता है यही चाहिए. Or you see that they are lasting for hours and hours and hours. इस तरह से नहीं होता. They are on performance enhancing drugs. They are on pharmaceutical drugs. तो लोगों के बॉडी में, लोगों के दिमाग में अपनी शरीर को लेकर के, अपनी परफॉर्मेंस को लेकर बहुत इनसिक्योरिटी बैठ जाती है. तो नॉट ओनली इज इट just bad for your mental health, but also bad for your physical health in the way कि erectile dysfunction हो सकता है anxiety की वजह से,
प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो सकता है एंग्जाइटी की वजह से, परफॉर्मेंस प्रेशर जो आ जाता है, एंड ऑफ कोर्स यू नो द एक्चुअल इंजरी तो है ही है, प्लस कभी कॉन्डम यूज़ नहीं दिखाते हैं जी. so many STIs, and you know these are people who professionally have to have a lot of sex with a lot of people. तो porn sets पे तो बहुत strong testing होती है जी. What I've heard, obviously I don't know this for a fact, इसकी हर शूट से पहले उनको टेस्ट किया जाता है. जैसे पहले कोविड के टाइम पे शूट से पहले हर किसी का टेस्ट होता था कोविड का, द सेम वे लोगों को तो ये नहीं बताया जा रहा है. करेक्ट. So it's a combination of a lot of different things, but what I always say to other people is that getting your sex ed from porn is like getting your physics lesson from a Rohit Shetty film. That's not what it looks like. That's not how it is. It is a figment of imagination. Yeah. It is creative licensing, and that's how we need to see it. Yeah. Has a patient ever come and told you, मैम ये तो मैंने porn में ऐसा देखा हुआ है यार, आप तो अलग बोल रहे हो? Who? Give me an instance. Very often, even in the comment section of my videos also, you'll see that if I talk about condom, they're like, अरे you know, पॉर्न सेट पे तो लोग इतने सारे लोग के साथ करते हैं, वहाँ तो किसी ने कॉन्डम नहीं बताया, ये बड़ी आई हैं हमें कॉन्डम के बारे में बताने, और समथिंग लाइक दैट. ऑफ्टन व्हाट आई से मोस्ट ऑफ्टन व्हेन आई एम स्पीकिंग टू कपल्स इज दैट थोड़ा डिज़ायर डिस्क्रेपेंसी हो जाती है, बिकॉज द मैन थिंक्स कि नॉक नॉक लेट्स गो फॉर इट वाला सिचुएशन होना चाहिए, वर्सेस द वुमन थिंक्स कि गिव इट सम टाइम टू बिल्ड इट अप. तो the man starts feeling like, क्योंकि porn में ऐसा देखा है, so the man starts feeling like the wife doesn't desire him or the partner doesn't desire him. So you know it creates a lot of discord. तो intimacy issues भी बहुत आ जाते हैं इसकी वजह से. जी. And I think intimacy is also a very important role when we talk about sex. Na? I mean, for a longer run, it is not really about penetration, like you said earlier. It is really about the intimacy that two people form among themselves. How often are you shamed for your profession? हर 3 घंटे पे जी. But also हर 1 घंटे पे somebody also comes and says something nice also. So I think the vast majority of the response is positive. चलेगा मेरे को. क्या बोलते हैं लोग आके? वही तमन्ना को ये सब करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, और you're ruining the culture of India, आप यूथ को ख़राब कर रही हैं. पता नहीं क्या ख़राब कर रहे हैं, ठीक है भाई कर रहे हैं तो कर रहे हैं. If that means less people have STIs and less people struggle with infertility and less people feel insecure about their body, कोई बात नहीं, कर रहे हैं खराब, चलेगा. लड़कियों के लिए सबसे ईजी क्या है यार, कैरेक्टर पे सवाल उठा दो, वही होता है. My character is questioned very often, but at the end of the day, them questioning my character is not going to change the fact that I really care about this, and I'm going to keep doing this. I heard this on Be a Man podcast. I heard सुशांत दिग्गीकर से कि हम पे जितने ईंटें फेंकोगे हम उन्हीं ईंटों से अपना महल बनाएंगे. And I think that is kind of the philosophy I want to imbibe. फेंकते रहो ईंटें. I will still use that to build a wall of public health because I really care about it and I care about my country a lot. So yeah. Makes sense. More power to you and Sushant both. Thank you. If a man and a woman are planning pregnancy, what should they do from the moment they want to have a child? Quit smoking. First thing. Most important thing. The effect of smoking on your fertility and your sexual health is very dramatic. तो एक जो सबसे सिंपल चीज़ हो हर किसी को वैसे ही करनी चाहिए, और कुछ नहीं करना है तो सुट्टा तो छोड़ दो कम से कम. Then the second thing is that basic exercise, better nutrition. If you're over the age of 35 and you've been struggling to have a kid for more than 6 months, after 6 months of unprotected sex, see your doctor, don't waste time. And if you're under 35, then 1 saal of unprotected sex, if it's not happening, see your doctor. Because age is a very, very important factor with fertility that we often kind of are not taught about, especially with women. तो बाकी चीज़ों पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा just figure out why it's not working. The third thing would be stress management, which is probably the most challenging thing out of all of these. Because in our century. How can you manage stress? But you have to manage stress, unfortunately. Better sleep, better nutrition. For people who are very heavily into going to the gym, don't do any steroid abuse, extremely important. Eat healthier, reduce extremely processed food consumption.
हर चीज़ थोड़ी बहुत प्रोसेस्ड होती है, बट हाइपर प्रोसेस्ड फूड्स नहीं कम कंज्यूम करें. हैव अ वैरायटी ऑफ कलर्स इन योर डाइट. द मोर डाइवर्स योर डाइट इज़ द बेटर योर ओवरऑल हेल्थ इज़. प्लस आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स छोटे छोटे जो होते हैं, जो अक्सर हम विटामिन ए बी सी के पीछे दौड़ते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता जिंक, सेलेनियम, ये छोटी छोटी चीज़ें कितनी फ़ायदा कर सकती हैं. सो डाइवर्सिटी इन डाइट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. व्हाट एल्स? बड़ी बड़ी बातें हैं ये. लिमिटिंग अल्कोहल कंजम्पशन. Sure. So I am also of the opinion that after reading a lot of research that no alcohol is good for you, but different पब्लिक हेल्थ बॉडीज से डिफरेंट थिंग्स. तो मैं इतनी बड़ी अथॉरिटी नहीं हूँ कि मैं कहती एकदम छोड़ दो, बट इफ इट्स अ पॉसिबिलिटी देन आई थिंक एब्सोल्युटली क्विटिंग इज द बेस्ट थिंग टू डू फॉर योर ओवरऑल हेल्थ प्लस योर फर्टिलिटी हेल्थ. Sure. My next question is all for my male audience. I'm sure you've been asked this before. Does size matter? I'll come back to the khujli analogy. It doesn't matter if you're scratching with a 6-foot pole or a 2-foot pole. If the itch is here and you're scratching here, the scratch will be gone. चाहे वो कितने बड़े डंडे से क्यों ना हो. It's if we kind of go back to the clitoris is the center of everything, तो size का हम क्या कर लेंगे उसमें? It's what is the saying? It's not the size of the boat, but it's the wave of the ocean that rocks your boat. So True. Absolutely. yeah. Correct. So I think people kind of need to stop getting insecure and kind of not use porn as their guiding force in life. And the average size of a penis is actually a lot smaller than most people think. Globally, average size is 5.25 inches, roughly. अगर 3.67 inches होता है, उससे कम होता है, तो हम उसको medically micro penis classify करते हैं. But even people with micro penises can successfully have children and have sex. तो कोई फर्क नहीं पड़ता है साइज से. जो ऐसा बता रहा है वो बकवास कर रहा है, आपको इनसिक्योरिटी बेच के आपको एक प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा है. जी जी. एंड ऑन योर पॉडकास्ट ओनली आई सॉ समवेयर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज penis enlargement surgery. Is it really surgically possible to do that? I thought ये myth है, ये हो ही नहीं सकता है. So जैसे ब्रेस्ट टिश्यू में होता है ना, हम इम्प्लांट डाल देते हैं. पीनस में इस तरह से नहीं होता है. सो हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस? I like how you're looking at the mic. So if you see that this mic is attached with this star over here, so this mic is staying in place because ये होल्डर भी है यहाँ पे और ये तार भी है. But if you cut this तार तो माइक नीचे लटक जाएगा. That's what penis enlargement surgery does. एक सस्पेंशन का एक लिगामेंट होता है, हम सस्पेंसरी लिगामेंट को काट देते हैं तो उससे penis appears longer. बट सपोर्टिव टिश्यू अगर आप हटा देंगे तो माइक सही से नहीं चलेगा. सो द पीनस कैन बिकम वॉन्की, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, स्कार टिश्यू बन के पीनस और ऊपर पुल अप हो सकता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती. इट्स नॉट अ वेरी सक्सेसफुल सर्जरी इज व्हाट आई मीन बेसिकली. या दैट्स ट्रू, एब्सोल्युटली. डज मास्टरबेशन लीड टू हेयर लॉस, वेट लॉस, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन? ये सब बहुत मिथ है. I'm going to preface this by saying because आजकल मेरे वीडियोस के बड़े एडिट्स बन रहे हैं बहुत ही खराब, जिसमें मुझे मेरी मेन पॉइंट को हटा दिया जा रहा है. If the relationship you have with masturbation is feeling unhealthy to you, then you're allowed to feel it's unhealthy. But all of the scientific data shows us कि masturbation से नुकसान नहीं होता है. It is a normal part of healthy sexual development. With that said, काफ़ी लोगों का masturbation behavior compulsive हो जाता है. तो अगर ऐसा हो रहा है then you can speak to an expert and scale back on the compulsiveness. But in and of itself, masturbation एक unhealthy habit नहीं होती है. जिसी तरह से अगर आपको पेंटिंग करने का बहुत ज़ोर से शौक हो गया है और आप इतनी पेंटिंग कर रहे हैं कि आपके हाथ में दर्द हो रहा है, आप सो नहीं रहे हैं क्योंकि आपको पेंटिंग करनी है, आप लोगों से मिलने नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपको पेंटिंग करनी है, आपके पूरे कपड़े चौपट हो चुके हैं क्योंकि आप पूरे दिन पेंटिंग कर रहे हैं, तो देन इट्स कंपल्सिव. By painting here we mean masturbation. No, but I'm saying like if you use painting as an example. Correct. But painting तो सब करते हैं यार, सबको डूडलिंग का शौक है. जी. Normal human creativity जैसे होती है. So yeah, it's kind of just understanding what is feeling healthy to you.
Yeah, but all these things are myth, right? कि hair loss होता है उससे, weight loss होता है उससे. कितने DMs आते हैं रोज ये questions के साथ? ये वाले question के साथ? गाली, email, सब. On average एक दिन में 100. It's not. Actually थोड़ा सा confusion ये हो गया है कि some people believe that पहले ना, I think it's important to set historical context to this. आजकल चाइल्ड बर्थ काफ़ी, it's still quite complicated but बहुत रोजी हो गया है आजकल. You know, most people have one kid and they're set for life. पहले 11 बच्चे करने होते थे, उसमें 5 बचते थे. और हमें एग की डिस्कवरी हैपन इन द लेट 1800s. किसकी? द ह्यूमन एग. तो हमें ये नहीं पता था वुमेन का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इन फॉर्मिंग द प्रेगनेंसी. For most of history, we've thought women only carry the pregnancy. We didn't know that they also contribute halfway for forming the pregnancy. तो semen was thought of as magical life force की semen डाल दो किसी में, बीज डाल दो किसी मिट्टी में, तो मिट्टी तो कुछ नहीं कर रही है, मिट्टी तो सिर्फ कैरी कर रही है, बीज में एक्चुअली पावर है. एंड दैट्स वाई पीपल हैव दिस आइडिया कि losing semen will do all of these bad things for you, which is why no FAP and no Nut November and all of that has happened. That's a whole other situation that has gone out of hand. It started off as a very very good kind of initiative कि people compulsive porn use से scale back करें. Then it somehow became no ejaculation, which was also okay. Now it's suddenly no masturbation. I don't have a problem with it per se. If it's helping somebody, great. बट मुझे लगता है कि लोगों में बहुत शेम इंस्टिल हो जाती है कि अगर कोई कमेंट करता है ना कि आई फेल्ड ऑन माई नो नॉट नवंबर, उसको इतनी गाली पड़ती है, फिर वो आदमी शेम इंटरनलाइज कर लेता है एंड दैट लीड्स टू अनहेल्दी सेक्शुअल बिहेवियर्स. So that's probably where the problem lies. But the amount of semen that comes out in an ejaculation is so small, it's like a teaspoonful. कि उसमें मतलब बाल्टी भर सीमेन निकले तो फिर प्रोटीन लॉस मैं मानती हूँ, बट इतने में क्या हो जाएगा जी. What is the science behind nocturnal dreams or wet dreams? या बहुत कॉमनली हम उसको wet dreams कहते हैं, जिसके अंदर मोस्टली नाइटफॉल भी हो जाता है. But what is this? I mean, what is the science behind this? So semen and sperm are being produced constantly. Now you can either let it out by ejaculating. If you're not doing it, it's going to come out. So evolutionary हमारा बॉडी क्या चाहता है कि हम बेस्ट स्पर्म को आगे पुश करें. तो जो भी ओल्ड स्पर्म होता है, बॉडी वांट्स टू गेट रिड ऑफ इट. बेस्ट स्पर्म हमें आगे इसलिए पुश करना है सो दैट वी आर एबल टू, वेरी सिंपल एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, कि हमारा बच्चा सबसे स्ट्रांग निकले. सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सो आई नीड टू हैव द फिटेस्ट किड, सो माई यू नो माई वंशज आर हेल्दी एंड हैप्पी. अगर हम उस हेल्दी यंग स्पर्म को नहीं निकाल रहे हैं तो वो अंदर बैठे बैठे ओल्ड हो जाएगा. अब ओल्ड को निकालने का कोई ना कोई तरीका चाहिए, बिकॉज if it's not coming out, that means when you do ejaculate inside a partner, then the old sperm is what's going to come out, and that doesn't make sense evolutionarily. When people are breastfeeding, अगर वो ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस ना करें और फीड ना करें तो उनको लीकिंग शुरू हो जाती है. The same thing happens. That's exactly what a wet dream is. You either take it out or it will come out on its own. दोनों में कोई ख़राब चीज़ नहीं है. It's a very normal part of sexual development. काफ़ी लोगों को जो लॉन्ग टर्म ejaculate नहीं करते हैं उनको भी हो ही जाता है. It's really not a big deal. नाक बह रही है ऐसे सोच लें. जी, तो ये बेसिकली पुराने सवाल पे ये हो जाता है कि if you don't do, I mean, if you go for no fap, then it will somehow make its way to come out. So if something is done in a more healthier way, you're okay. I think if it's done without shame, because we associate so much shame with sex and desire, that it leads to a lot of health complications for people, mental health, physical health, both, and that's just not good. Yeah, I'm just kind of like hoping for a shame-free world, I guess. Yeah, far from there, yeah. I think far from there, but we are getting. We'll get there one day. Yeah, we are getting there. Let's have a positive outlook. We are getting there. What role does food items play in intimacy and in an equation between a couple? I read this something which I found really funny. It said in the 1800s, to control people's appetite for sex, लोगों ने cereals और crackers बनाए. तो bland food है तो थोड़ा easy हो जाता है उनके hormones पे. Is it true? So there's a doctor, there used to be a doctor called Dr. John Harvey Kellogg. He used to work at he built this hospital called the Battle Creek Sanatorium, and he believed that if you eat
hot and spicy food, the same kind of tamasic, rajasic food philosophy. आपका sexual desire spike होगा. We don't have any evidence to say that this works. Science doesn't support this claim. But उनके दिमाग में ये था कि bland खाना खिलाओ तो him and his brother together invented cornflakes. They had a big split off eventually because his brother was like, चीनी नहीं ऐड करोगे तो कोई नहीं खाएगा इसे, and he was like, नहीं हमें healthy बनना है. So the brother took the company, added चीनी, and now we have cornflakes that sits in our pantry every day. We don't have much evidence to say that food changes your desire. Specific food changes your desire. Overall, eating a healthy diet makes you healthier, which means you feel better desire. Overall, eating a poor diet leads to bad quality of life. I mean, that's just a cascade from there. No, what I meant to ask is, during the act, people use strawberries, chocolates. If people are enjoying it, good, but there's no sort of science to back it up. The only thing that I think legitimately does make sense is that oysters kind of make sense. Oysters are very zinc rich, and zinc is a micronutrient जिसके बारे में हम अक्सर भूल जाते हैं. तो oysters, yeah, sure, but if you study the history of aphrodisiacs, essentially, you'll see that जो commonly जिन food को बोला जाता है कि आपकी desire बढ़ाते हैं, वो difficult to find substances होती हैं. जैसे कीड़ा जड़ी चलता है आजकल. कीड़ा जड़ी actually does have some evidence to it. It helps in erectile dysfunction if I'm not wrong. But कीड़ा जड़ी इतना महंगा है ना, इतना महंगा. I think it goes for like $1,000 per kilo or something. बहुत ही महंगा होता है वो. I'm absolutely wrong on this number for sure. आजकल कीड़ा जड़ी है. In the medieval ages जब यूरोप में potatoes नहीं होते थे तो potatoes were considered an aphrodisiac. अब आलू मटर की सब्जी खा के आप किसी को नहीं कहने वाले हैं that this is an aphrodisiac because now potatoes are easily available. So now what is fancy? Champagne and strawberries. Anything that has a exclusivity or rarity associated with it, has luxury associated with it, is usually thought to be an aphrodisiac, although very limited science to back it up. I think anything that you attach to sex and make it a little luxurious, even sex toys for that matter. I mean, it's great. I mean, whoever likes to use it, I think it's really fun. But sometimes it can also harm two people's relationship. It's a 6,000 crore, 600 crore market. 600 crore market. That's the last data I read. So I think sex toys can be very wonderful because a lot of able-bodied people don't realize how different sex can be for disabled people. Wonderful invention, sex toys that way. Also, people who struggle with sexual dysfunction, toys can be very, very helpful and wonderful. किसी को something as simple as vaginismus में हम लोग dilators देना शुरू करते हैं. So starting with the size and the thickness of a pinky finger, हम लोग बस silicone के rods होते हैं. We teach the patient to insert it inside themselves so that they get comfortable with the idea of penetration. Toys अक्सर penetrative ही होते हैं, so can help with people there. If people are struggling to have or maintain an erection, then we can have penis rings that give constant stimulation, which can be helpful. So I believe, and this is coming from a lot of recent sex med research, is that toys should be prescribed by doctors at this point because they have such a huge role in helping with sexual dysfunction. The problem is we see sex and sexuality as something so dirty and dangerous that हम dysfunction तक पहुँचते ही नहीं हैं. जी. No, even condoms today are in the far shelf of our cupboards कि कोई दिखे ना. तो sex toys तो मतलब खद्दा खोदना पड़ेगा छुपाने के लिए. मतलब I mean imagine the kind of, there are some myth around sex. Actually मैंने Google किया as a research myths around sex. एक आर्टिकल मिला, आपको पता है उसमें पिक्चर किसका था? जॉनी सिंस का. Just imagine, there is an article about myth about sex and the main hero image is Johnny Sins. Johnny Sins is a porn star. Hilarious. Hilarious. Some myth and then you break it for us. Men think more about sex than women. Bullshit. Yeah. Everybody thinks adequately about sex. Men just reported more on questionnaires because they're not shamed for desire the way women are. True. The pull-out method won't get you pregnant. Bullshit again. I think there's a 30% chance of failure. So not only is it कि you may not be able to withdraw in time, but also आपके previous ejaculation का sperm
यूरेथ्रा में रह सकता है. So the pipe that kind of connects the penis to the outside world. तो उसमें रह सकता है. So when the new gush of semen comes in, or pre-cum comes in actually, not even semen, तो वो आगे push कर सकता है. So pre-cum can contain sperm. Don't rely on this. So pre-cum can also lead to pregnancy. Sure. If she is not making pleasurable sounds, then she is not enjoying the process. Oh no. I think porn has fed us this lie, no, that women should scream. And I think Japanese porn is the weirdest that way with the kind of sounds that they show. Yeah. But people have different ways of vocalizing. It's not pleasure dependent. Let's put it that way. Even squirting is a thing, right? I mean, for so long they show squirting in a way that's the only way that ultimately, chalo, now the woman has orgasm, which is also false. Absolutely. Okay. You can get pregnant while having oral sex. Okay, I can't share this answer as complete bullshit without sharing one story. There was, technically you can't, but there was some situation where a woman had given a blowjob to her partner, so she had swallowed and the semen stayed inside her stomach, and then there was an accident. No, there was a crime where she got stabbed in the stomach. So the semen leaked out into the abdominal cavity. Your expression is brilliant. So उस stomach से semen leak out कर गया बाहर. Now the tube, जो uterus के side पे से tubes होती हैं ना, वो ovary से attach नहीं होती हैं, वो ऐसी होती हैं. They're just like looking inside the stomach कि कहाँ से मैं egg पकड़ूँ, कहाँ से मैं egg को अंदर ले लूँ. So this has been explained by this कि saying कि वो abdominal cavity में semen तैर रहा था, तो the tubes picked it up and took it inside. It's highly unlikely, but एक case history है दुनिया की ऐसी. Is this a true story? There's an actual case report on this. मुझे कुछ समझ सा नहीं आता है. I don't entirely agree with it. I think they're just not disclosing that they've had sex. But crazy. Who knows? But technically you can't. It doesn't. No. Yeah. Correct. Logically, theoretically, doesn't check out. Last two. Menopause is the end of a woman's sex life. Often the beginning. Correct. I think by the time people hit menopause, they kind of stop giving a shit about other things. They're just like, ये मुझे life में चाहिए, and this is how I want things. So the idea of insecurity and shame kind of tones down a lot. Definitely ये होता है कि आपके hormones में change हो जाता है. तो if you're not getting good hormonal support, sex can become extremely painful. You can lose desire. But on the other hand, some people's desire skyrockets, so libido skyrockets. So menopause is different for everybody, but it doesn't mean it's the end of your sex life. Just find the right medical support and you're sorted. Sure. A man's hand or feet size can tell you about his penis size. It's like saying कि उसका हाथ बड़ा है तो उसकी नाक बड़ी होगी, you know. There's no correlation. But so many myths, na? So much goes around. There were so many actually. These were just handpicked, but there were so many bizarre ones that I read online. Which is why my last question to you, Tanaya, is that I have a lot of female audience who follow Pinkvilla, and of course there is also a majority section also which is men. What do you want to tell all of them as far as sex education is concerned, vis-a-vis the shame that is attached to it? Let's put it this way. I was doing a workshop in the US. I used to live in the US a couple of years back, last year. And I was doing a workshop with older Indian women. When I say older, they were all 50, 60 plus. And we were talking about general health, especially sexual health, menstrual health, reproductive health. And at the end of the workshop, I made everybody just say, साथ में भी about some odd 80-100 women in that room, and I was like, अब हम 3 बार chant करेंगे vagina. That's all we did. We all collectively said vagina, 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 because people don't say this word and they associate shame with it. Yeah. And after the session, you know, this older woman, she must have been late 60s, early 70s. She came to me and she was almost crying. She's like, I've never said that word in my whole life. Wow. And as I chatted more and more with her, I learned that she had prolapse. तो उनको बहुत symptoms थे. उनका prolapse में basically genital organs, pelvic organs बाहर आने लगते हैं. So literally organs are hanging out. And she said, I have not been to a doctor for the longest time. जब तक मुझे बहुत symptoms नहीं हो गए थे, मैं डॉक्टर के पास नहीं गई थी, because I've never said the word vagina in my life before this afternoon.
And that's what shame does. Yeah. It leads to bad health. Yeah. And as a doctor, that's not something we ever want or aim for. So dismantling shame is the first step you can take towards better health and understanding your body better. Yeah. What a heartbreaking story. I was, yeah. For a woman to not say vagina her whole life, it is so dichotomically horrible. But I'm glad she did that day. Yes. And I hope things change from that point forward. Yes, absolutely. Which is why these conversations, Tanaya, I hate to work on Sundays. But today has been extremely special because you gave us this time. There's so much we learned from it. And that is also why I love podcasts. I think this is the day when I'm more of a journalist than a content creator. Thank you so much. This means a lot to me. Thank you for your time. It's been wonderful being here. Thanks. Thank you. You can also hear the entire conversation on Google Podcasts, Spotify, Amazon Music, Podcast Index, RSS Community, and Listen Notes.